सर बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। पहले तो सर इस वक्त जिस तरह से पैन आउट हुआ है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, डिमांड ट्रेंड्स, बिजनेस आउटलुक कैसा दिख रहा है, और अगर मैं आगे आउटलुक की बात करूं तो उस पर आपका क्या व्यू है? लेट्स से फोर्थ क्वार्टर कैसे ट्रेंड्स दिखा रहा है, और फिर हम ऑफकोर्स अगले साल का भी एक आपसे आउटलुक लेंगे। बट फिलहाल डिमांड ट्रेंड्स किस तरह से दिख रहे हैं, व्हाट आर द ग्रोथ ड्राइवर्स, और आगे क्या आउटलुक है सर? थैंक यू स्वाति। जैसे आपने कहा, डिमांड एज वेल एज द ग्रोथ आउटलुक फॉर ये सेक्टर जो है इसमें काफ़ी पॉजिटिव है। एंड डिस्पाइट world facing a very difficult COVID situation, actually the demand for chemicals and all the products did not go down. There was a drop in prices because of certain pressure or perception. And also the main problem जो थी वो US से exports की थी, जो जिसमें काफ़ी कमी आई है हमारे यहाँ पे, but that is now back to normal and the prices are up and the demand outlook is good. The challenge which we've had in the last, let's say, 6-7 months has been the rising energy prices, which all of us can see right across all energy inputs, whether it be coal or whether it be coke or natural gas or HFO. All these prices are up. Only good news is that I think the customers have been very accommodative and they've been able to absorb most of the price increases. ओके, ऑल राइट। तो ठीक ठाक यहाँ पर सिचुएशन दिख रही है, डिमांड स्ट्रांग है, आउटलुक बुलिश एंड पॉजिटिव ही है जैसा आप बता रहे हैं सर। सोडा ऐश, बिकॉज इट्स द मेजर एंड अ बिग कंपोनेंट ऑफ योर बिजनेस, आपके 50% रेवेन्यूज वहाँ से आते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी किस तरीके की एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ सोडा ऐश प्राइसेस करेंटली, और आगे वहाँ पर क्या लग रहा है, किस तरीके के ट्रेंड्स हैं प्राइसेस को लेकर? So actually, soda ash market is fairly, I would say, in a tight market situation where the demand is ahead of the supplies which are there. And in the short term, till about year 25-26, we do not anticipate the situation to change. In fact, we've been ये लोग हम पहले से ही बात कर रहे थे, बीच में कोविड के वजह से कुछ कमी आ गई थी, उसके वजह से the demand supply had almost balanced out, but now again it has gone back to the same level which we had said. So new capacities we don't see coming very soon, and this situation is going to be tight. And इसमें main demand की बढ़ोतरी जो है वो जो आई है, एक तो this solar glass sector से, which is growing at a rapid pace of 6%. This is to make the solar panels. जिसकी demand काफी बढ़ने की वजह से I think that sector is giving positive momentum. Then also the whole issue related to the real estate sector coming back and all other consumption sector coming back, where it has been a bit of a slow run has been on the auto glass sector, where I think because of chip shortage there's been a bit of a issue, but I think even that should be back. But overall अगर आप देखेंगे जो demand की situation is going to continue to be strong, and we are adding a bit of capacity in India, but we are fully sold out. All manufacturers are facing the same situation. So I think this is not likely to change. ओके, डिमांड सिचुएशन स्ट्रांग है, विच बेसिकली मीन्स कि सर प्राइसेस इसी लेवल्स या एलिवेटेड लेवल्स पर ही रहेंगे, बिकॉज डिमांड स्ट्रांग है तो आपको नहीं लगता वहाँ पर कोई कमी आएगी? इज दैट द राइट ट्रेंड सर? ऑल्सो सर, ग्लोबल सोडा ऐश डिमांड एस्टिमेट कर रहे हैं कि एक्सीड करेगी प्रोडक्शन बाय 3 मिलियन टन्स पर एनम टिल 25-26, विच इज़ अबाउट 2 to 3 years नाउ। ये आंकड़ा आपको लगता है ठीक है, और प्राइसेस इसी वजह से एलिवेटेड रहेंगे? डिमांड सप्लाई की वजह से एलिवेटेड रहेंगे जरूर, और दूसरी चीज व्हाई द प्राइस हैव मूव्ड अप आल्सो इज बिकॉज ऑफ द इनपुट कॉस्ट प्रेशर, mainly coming from heightened energy cost as well as freight cost. Freight cost काफी बढ़ी है, shipping costs have increased, so all that is one of the main drivers of why the prices have moved up. But of course the margins have also expanded, so I must say that the demand supply situation augurs well, and that is because of mainly new applications which have come in. The whole bicarbonate, which is a product made from soda ash, that is seeing a big demand in flue gas treatment sector as world is looking towards a more emission control. Then the solar glass, which is a sustainability product. Those are the main demand drivers.
बिल्कुल, तो देयर इज़ अ रीज़न जब हमें जो दिख रहा है कि डिमांड क्यों आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी आपने जो एक्सप्लेन किया कहाँ से डिमांड आ रही है और वो क्यों एलिवेटेड लेवल्स पर रहेगी। फाइन सर, सोडा ऐश की तो बात हो गई। एक्सपोर्ट मार्केट्स पर नज़र डालेंगे सर, वहाँ पर किस तरीके के ट्रेंड्स दिख रहे हैं, स्पेशली यूके मार्केट, कितने ट्रेंड्स हैं प्रॉमिसिंग, व्हाट आर द मार्केट्स दैट आर परफॉर्मिंग फॉर यू, व्हाट आर लैगिंग बिहाइंड, FY23 का सर क्या आउटलुक लग रहा है एक्सपोर्ट्स को लेकर? All in all, I would say the markets for India and Asian market has been fairly strong. The markets where Kenya or Kenyan plant exports into, they have been fairly strong, and all sectors are back, including the mining sector in Africa is back with a lot of increase in production. UK, Kenya, for example, has been profitable for last 5-6 quarters, and UK, which had a major issue with its profitability, is also back in profit in the third quarter, mainly on the back of commissioning of their carbon capture plant. And our plan in UK is to go towards value-added products, which is to move the product range towards pharmaceutical salt as well as food grade bicarbonate and pharmaceutical grade bicarbonate. That's the broad plan. There we are not adding volume. Volume addition will take place in India and probably a little bit later in Kenya. UK, our focus will remain to move towards more high value and value added products. ओके श्योर, सो ये तो बात हो गई सर आपके डिफरेंट मार्केट्स की और वहाँ पर क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं, कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जॉनसन मैथ्यू एक्विजिशन, सर मैथ्यू एक्विजिशन, इस पर क्या अपडेट है? इफ़ यू कैन गिव अस अ सेंस ऑफ वेयर इज इट एट दिस स्टेज? It had come in the press. We had also stated it is a speculative news. We have no such, at least on paper, such any review of such nature. So we have stated that very clearly. If at all there is anything, we will come back to you. But this one is certainly a speculative news. ओके, दिस वन इज़ अ स्पेकुलेशन, ये क्लैरिफिकेशन आपने दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस सर, बिकॉज वहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है एंड आई थिंक द अपॉर्चुनिटी फॉर अ कंपनी लाइक योर्स इज़ ऑल्सो प्रिटी इमेंस। कैसे देख रहे हैं इस स्पेस में आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, उस पर क्या काम हुआ है अब तक, क्या आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इफ़ यू कैन एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स सर। We have worked on this in our R&D lab. No specific approvals have been taken, so there's nothing specific to say in terms of investment plan. If you look at our investment of about 2,600 crores in Tata Chemicals and 900 crores in Rallis, they are mainly in the core products which we have, and I think we'll continue to invest there. We have actually reviewed our entire strategy. We think कि हमारे जो core products हैं उसमें growth opportunity is very high. So we will come back with fresh additional capital investment, because जो a capital investment proposal है 2,600 crore and 900, this will finish by year 23. So, and there is further opportunity to grow our current areas which have a good profit margin, which have a good growth potential. So we are focused clearly to even more enhance our investments in these areas. ओके, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है ये कि जो नेक्स्ट कैपेक्स साइकिल है जिसमें आप जो FY23 तक ख़त्म होगी, उसके बाद डेफिनेटली इधर अपॉर्चुनिटी देखते हैं और वहाँ कंपनी इन्वेस्टमेंट्स देखेगी एंड वहाँ पर यू फील द रिटर्न इज़ ऑल्सो क्वाइट हेल्दी। ऑल राइट, क्विकली सर, आपने एक्विजिशंस की बात की, ऑफ कोर्स जॉनसन मैथी यू आर सेइंग इज स्पेक्यूलेटिव, बट ओवर एंड अबव दिस कौन से एरियाज एंड सेगमेंट्स हैं जहाँ आपको लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वक्त मिल सकती है, यू कुड बी आइंग टू फर्दर ग्रो? स्ट्रेटेजिकली क्या फिट करता है आपके पोर्टफोलियो में? एनीथिंग जोग्राफिकली और सेगमेंट वाइज वर्टिकली जो आपकी नज़र में हो, और द एरिया इफ़ यू कैन गिव अस अ सेंस जहाँ आप देख रहे हैं कोई? So for us, as I said, the key growth platform continues to remain inorganic chemicals, which is where we have a leadership position. We have gone beyond sodium. We have invested in the silica-related businesses, which is application in tire and rubber industry. So we'll continue to focus on our core strength, and that is where we are playing. And as far as Rallis is playing, they will continue to focus on agrochemicals. So our two broad pillars of growth are inorganic chemicals and agrochemicals. We are not looking at any new area. There is enough opportunity to innovate, to find new applications, to find growth markets इसी area में, and I think they have good growth potential. And products coming out of India will be very, very competitive in the world. So we believe that we are in a good position where we are today.
मिस्टर मुकुंदन, हमने ऑफ कोर्स समझा आपसे क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, कहाँ फोकस एरियाज रहेंगे कंपनी के इन द कमिंग क्वार्टर्स, बट मैं आपसे जानना चाहूँगी जिस तरह से सरकार का फोकस है स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल्स को लेकर एंड इंडिया की केमिकल बेस को स्ट्रेंथन करने के लिए, दैट होल आत्मनिर्भर भारत स्कीम, आप कैसे देखते हैं वो अपॉर्चुनिटी फॉर योर कंपनी? ऑल्सो अगर हम देखें, रिसेंटली आईटैट ने रिलीफ ग्रांट की है फॉर कंपनीज allow कर रहे हैं टैक्स डिडक्शन और फर्टिलाइजर सब्सिडी इनकम. हाउ डज इट हेल्प अ कंपनी लाइक योर्स, सर? So the tax matter is a old matter. So really, it is resolution of a matter which has been pending in the pending through the appellate authorities, and we are thankful that they have ruled in our favor. So I think that is that's not a new matter; it's a fairly old matter. So I would say that it's part of the balance sheet item, and really does not affect the future in any way. But it's a positive development, Okay. and it's an interpretation issue which many companies will benefit from. As far as the government Correct. policy is concerned, as far as India has always had a competitive advantage in specialty chemical area, and all the effort which government has done in improving ease of doing business as well as the cost of doing business. In addition to that, all these new steps they've taken with respect to Gati Shakti, improving logistics within India, improving the whole issue related to the approval process, which has been now completely digitized so that capital expenditure can come on stream faster. All these will reduce the time taken and the whole process which it takes for us to put up a new project. In addition to that, also the cost of business comes down because of more efficiency which government has put all these schemes through. In some sectors, they've offered PLI, and in chemical sector, it is not so much that PLI has been offered. We have been more or less competitive, but you ask the government for Right. specific PLI scheme even in the sectors we are in. Other than that, I would say that there is Wonderful. very positive support from government, and this will continue to be there. And which is why you're seeing a lot of investment happening here, not just for Indian demand, but also to बिल्कुल. cater to demand in Asia में or as well as ग्लोबल डिमांड. the world, global demand. बिल्कुल. सो ग्लोबल, डोमेस्टिक ही नहीं बट यहाँ पर आपको फैक्टर ग्लोबल भी मिल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग एंड ऑगरिंग वेल फॉर द सेक्टर. सर, क्विकली आखिरी सवाल आपसे, न्यूट्रास्यूटिकल सेगमेंट वो बहुत अच्छे यहाँ पर ट्रेंड्स दिखा रहा है, वहाँ पर क्या एक्सपेंशन प्लान्स हैं आपके, और ओवरऑल कैपेसिटी एक्सपेंशन अगर हम देखें फॉर द कंपनी, किस लेवल्स पर हम देखेंगे वो बढ़ते हुए ओवर द नेक्स्ट लेट्स से 1-2 years, सर? The nutraceutical plant actually is a new technology, fermentation technology for us, and इसको हम देखते हैं कि इसमें we have to learn a lot more. Utilization of capacity utilization is still not full. That is what is the current budget year which we are entering. That is what we will be planning to do. We have a lot more to learn. It's only a 5,000 ton plant. After the capacity utilization becomes full, we'll think about putting additional capacity there. But it is a very, very new and a nascent business. And as I said, our focus remains the core on the main core business, which is already of a sizable size. This one will take a bit more to mature, but we are fully supportive to learn and grow that piece. Because if you look at the shape of the company 10 years from now, it will be very critical.